नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is the pre-market report for 25th August 2025, that is on the coming Monday. Let us quickly look at the FNO data because FNO data is very important in determining the market momentum based on the participants' data. How to read this data? Thursday means the previous day, what was the data, and Friday means what all these participants carried on Friday, and the net total, what is the available data for Monday. सो पहले रिटेलर्स को देखे तो रिटेलर पहले से बुलिश था, तो उन्होंने कुछ 5600 लोड्स और ऐड कर दिया और उनका टोटल इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग रह गया 1,17,000, तो 1.17 lakhs. दिस इज अ हाई नंबर. एफ जब ट्रम्प आने के बाद एफ पूरा इंडियन मार्केट में बेरिश पोजिशंस लेके जा रहे हैं. उनका इंडेक्स फीचर्स और इन्होंने 3005 क्वांटिटी ऐड कर दी और टोटल रह गया 1.71 लाख. प्रोस फैंसी नंबर 222 लॉट सेल कर दिया एंड उन वो अभी नेट लॉन्ग में 25,476 लॉट. And DIA, so they are also long on index futures, that is coming around 29,000. So overall, if you look at this data, so I would say this is bearish because FA is fully short on index futures, and retailers are the major index long participants. Now coming to index coal, so index coal and Friday retailers sold around 25,000 lot, and their total longs it is left only 11,000. एफआई उन्होंने भी सेल कर दिया करीब 45,000 लॉट और उनका नेट सेल में 59,000 पहुंच गया. प्रोस कुछ पोजीशंस ऐड किया 69,700 कॉन्ट्रैक्ट्स और उनका टोटल अब वो नेट लॉन्ग में आ गया 47,000 लॉट्स. डे का तो फैंसी नंबर चला है 950, so there is no impact with the DA data. इंडेक्स पुट, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. इंडेक्स पुट में हम लोग देखेगा तो रिटेलर्स ने ओवर नेकेड पुट ऐड कर दिया है करीब 1.73 लाख. दिस इज ह्यूज नंबर एंड द टोटल नंबर index put short, it is reached to 5.8 lakh. This is, I think this is one of the highest number in the recent times. This is not at all good for the market. What will happen is that अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी नीचे आने का डर रहते हैं, डिप तो बनता है. और बाकी पूरा पार्टिसिपेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखो, चाहे एफ हो, प्रोस हो, डी हो, सब शॉर्ट में बैठा हुआ है. आई मीन सॉरी, इंडेक्स पुट लॉन्ग में बैठा हुआ है. सो द रिटेलर्स आर रियली बुलिश across the index futures and index options, and the other two participants, they are fully bearish. या हम लोग एक बार स्टॉक फ्यूचर का भी देख लेते हैं. स्टॉक फ्यूचर में एफ और प्रोस थोड़ा और पोजीशंस शॉर्ट्स ऐड कर दिया, उनका लॉन्ग्स घट कर रह गया 13,46,000 एंड प्रोस का रह गया 3.8 lakhs. एंड रिटेलर्स दे आर running with massive 22.4 lakhs. This is the index futures. And stock calls, you can see here retailers added again 22,000 contracts. That total reached to 7.36 lakh. And you can see here retailers are the only carrying the longs, and all the other participants are short on stock calls as well. स्टॉक पुट में देखेगा तो वहाँ भी रिटेलर ने 44,000 का तो ऐड कर लिया. सो 44,000 they've added as the stock put writing. So their total writing has reached to 2.14 lakhs. And both FA and pros, they are carrying stock put longs. So overall, if I wanted to tell this data, stock futures, I can say this data is mixed.
because DI added some longs and retailers also. Pros and FI are short. But then I'll say this data is mixed because the overall retailers FI pros they are long. Stock calls again. So this data is fully bearish because the retailers are the only one carrying the longs. Stock put also, I would say this data is also bearish because the retailers are the only ones carrying bullish positions. To conclude, so with the global momentum, our market might open a gap up, but then don't chase that gap up. So wait for a retracement because of this FNO data. Retailers taken ultra bullish positions. Let us also to take a look at the market overview on 22 August, how the market closed on Friday. So Nifty closed around 1% with more than 200 points in negative. Sensex it is close around 700 points in negative, so it is also around 1%. Bank Nifty was a major uh, dragger, so it dragged by around 600 points and it closed more than 1% at the downside. Mid cap select. So this is an interesting story. So in my video also mentioned uh, around more than 50% of the weighted stocks in the mid cap selects they were running in positive side. That's the reason you can see mid cap though the entire market was down, mid cap was adjusted to close 0.11 percentage on the positive side. India VIX you can see that it is increased more than 3 percentage, and so you can see that the option premiums must have increased with this, but Monday or with the opening candle itself the index might drop, so the premium might erode with the opening itself. And if you look at the rupee strength, so the rupee once again it is weakened further, and it is close on a bad closing, that is 87.53. And now the crude prices, if you look at, there is a mild increase in the crude prices because of the demand increase and all. Whereas in the case of natural gas, it is showing around 4.5 percentage of negative. Moving ahead, so let us take a look at which are the top gainers in Nifty. You can see M&M, Maruti, Bell, Bharti Airtel, Titan, Bajaj Finance, Apollo Hospital, and Bajaj Auto. They were the top Nifty gainers. I've marked the volume, so the volume will help you to understand what is the buying demand in these stocks. You can see Bell is having the highest volume. They are moving to the top losses in Nifty. So a lot of Grasim, Asian Paint, Adani Enterprise, Ultratech, Cement, Hero MotoCorp, Tata Steel, ITC, lot of stocks, and I've marked the volumes. So the volume will show what is the intents of the sellings happen in all these stocks. So while you make the FNO positions, this volume always help you to determine इसमें लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है. चलो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं. That is from the Jackson Hole Symposium updates. Those who are not aware, okay, what is this Jackson Hole? I just mentioned here, okay, this is the annual gathering of the central bankers, economists, financial market participants, and academics from around the world. The event is a forum for discussing the important long-term policy challenges. The proceedings and official remarks, including the Fed chairman's speech, are made available to the public. So to conclude, the Jackson Hole key takeaways, Powell's final address, because this is Jerome Powell's eighth and final address in the chair of the Federal Reserve before his 10th person next May. So there is a shift we have seen in the monetary policy. Powell speech was more or less the dovish side. तो ये हिंट कर रहे हैं कि ये सितंबर में एक रेट कट एफएमसी मीटिंग के जरिए एक रेट कट का पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. तो ये इनका कहना है कि इन्फ्लेशन नीचे जा रहे हैं, तो ये जो पॉलिसी स्टैंड है जो उसको बदलने का समय आ गया, तो ही इज इनडायरेक्टली इंडिंग दैट a rate cut is going to happen. And another thing we need to notice that lot of pressure is coming from Trump. ट्रम्प ने ऐसे प्रेशर डाल के रखा है कि फेड के ऊपर रेट कट करो नहीं तो मैं तुम लोगों को निकाल दूंगा. तो ये भी हो सकता है कि
ये ट्रम्प का प्रेशर का वजह से ये लोग एक डाविश स्टैंस ले लिया. And finally, market reaction after this Jackson Hole Symposium outcome. You have seen Dow Jones rallied, Nasdaq, S&P, all the indices it made new ATH. तो इसका असर जब पूरा ग्लोबल मार्केट में मंडे को दिखने वाले हैं. हमारा मार्केट भी भागने के लिए तैयार है, लेकिन एफ एन ओ डाटा थोड़ा खराब है, क्योंकि रिटेलर्स अल्ट्रा बुलिश पोजीशन लेके है. अदरवाइज देयर इज नो नेगेटिव फॉर आवर मार्केट एट दिस मोमेंट. हम लोग एक बार और जो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ का भी नज़र डाल लेते हैं. पहले तो एच डी एफ सी बैंक का बोनस इश्यू. तो एक सवाल आता है कि ये रिवॉर्ड है कि एक ट्रैप है. एच डी एफ सी बैंक has declared a 1:1 bonus ratio for all the shareholders. The record date it was mentioned on 27th August 2025. लेकिन जो 27 अगस्त है ये मार्केट हॉलीडे है, इसलिए जो एक्स डेट अभी बन रहे 26 अगस्त. सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कोई भी अगर 26 तारीख को ये जो एच डी एफ सी के शेयर होल्ड करेगा उनको 1:1 रेशियो में एक बोनस शेयर मिल जाएगा. लेकिन इसमें एक ट्रैप ये है कि ये जो टैक्स इम्प्लीकेशन है, जो 1:1 जो शेयर दे रहे, ये जो दिस इज सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स. A 20% short-term capital gain is applicable to this 1:1 share allotment. And also a 12.5 long-term capital gain applies on gains above 1.25 lakh if sold after 1 year. So ये जो टैक्स का जो बोझ है, इसी की वजह से जो जितना भी इन्वेस्टर्स है उसका जो जितना भी प्रॉफिट वो लोग देख रहे हैं उनमें से डेंट आ सकते हैं. So the investor advice is that so retail investors are advised to hold the bonus share for over a year. Otherwise 20% तो टैक्स देना मांगता है. ये था बड़ा न्यूज़. तो ये जो 26 और 28 को जो नेक्स्ट जो मंथली एक्सपायरी है, वी कैन सी सम वॉलेटाइल मूवमेंट इन एच डी एफ सी बैंक. इसके ऊपर नज़र रखना भाई. एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो ज़ीरो जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस. ओके, सो इसका मतलब है जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम 18% जीएसटी चलता था, सो इसको ज़ीरो करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही. सो दिस मूव इज टू मेक जो इंश्योरेंस अफोर्डेबल टू द पॉलिसी होल्डर्स. ओके, इसका जो बेनिफिशियरी है ऑब्वियसली जो कंज्यूमर्स है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है और जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है, क्योंकि इनका मार्जिन प्रेशर में जो डेंट आएगा इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो मंडे को हम लोगों को जितना भी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उनके ऊपर कुछ असर देखने को मिलेगा, तो वही वॉच रखना. और आगे जाते हैं एक और न्यूज़ है विप्रो. विप्रो has acquired Harman Digital Transformation Solution business for $375 million. सो दिस इज सीन इज अ स्ट्रैटेजिक मूव. लॉन्ग टर्म में विप्रो के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में कुछ मार्जिन डायल्यूशन दिख रही है. दूसरा था वोडाफोन आइडिया. सो सम रूमर्स और सम रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज considering a relief package to address a significant AGR due. So that's why you can see that this share has rallied more than 7% on Friday. अगर ये न्यूज़ सच है तो ये रैली आगे कंटिन्यू होगा. अगर वैसे फेक न्यूज़ है तो ये जैसे ऊपर गया उससे ज़्यादा तेजी से नीचे आएगा. एक Nazara Technologies, the company stock came under pressure after its associate firm, Moonshine Technologies, ceased offering money-based online gaming for the recent passing of the online gaming bill by the parliament. तो इसका मतलब क्या है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज है, इसका कुछ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म ऊपर इसका कुछ होल्डिंग्स था, तो उसी का प्रेशर में नज़ारा टेक्नोलॉजीज नीचे जा रहा था. इसका और भी ये नीचे जा सकते हैं हर कंपनी ने इसका कुछ एड्रेस नहीं किया तो. And finally, R Systems ये ऊपर गया 17% after the company announced the acquisition of Novigo Solutions for 400 crores. So these are the stock specific news in our market, and this is my personal view for our market for tomorrow.
So first point is that the bullish sentiment and strong Monday open is expected because of the global positive momentum. हम लोग हमारा मार्केट में एक गैप अप का संभावना है. मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा मंडे. एफआई इधर वापस आ सकते हैं क्योंकि उधर जो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो वो लोग जो बॉन्ड में ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएगा, तो दे लुक फॉर emerging market. And some of the sectors you need to watch on Monday. You the key sectors say IT, real estate and home finance. अब जब भी जो रेट कट वगैरह होते हैं तो ये जो सेक्टर्स है इनको बेनिफिट पड़ते हैं. और एक और बात है, जैसे जो फेड ने रेट कट किया, हमारा आरबीआई के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा. सो हमारा आरबीआई का जो नेक्स्ट मीट है जो अक्टूबर में आने वाले हैं, उसमें आरबीआई भी रेट कट कर सकती है. ये भी हमारा मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकती है. सो ये सब था जो हमारा जो प्री मार्केट रिपोर्ट में जो बिफोर आवर मार्केट ओपनिंग हम लोग ये जानना जरूरी था. आई बिलीव दिस दिस ऑल दिस डाटा मेक्स यू टू understand how the market movement can be on Monday. If you like this video and the content, please subscribe to my channel, and please like the video and share it with your friends. Thank you.